रहो। दिस इज जेवीएन डॉक्टर ब्रजराज सिंह चौहान, एसोसिएट प्रोफेसर, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर, डिपार्टमेंट ऑफ एफईएन। प्रोग्राम नेम बीएससी बीएड पीसीएम 5th सेम एंड कोर्स नेम मल्टीवेरिएट कैलकुलस एंड वेक्टर डिफरेंशिएशन। Session of today is evaluate some numerical problem of double integration. So problem is in front of you, the evaluation of the integration double integration r x plus y whole square dx dy over the region r bounded by the ellipse. Here you have to find the area of ellipse. We are knowing well the equation of ellipse is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. This is the equation of the ellipse. So in order to solving this problem, the region of whole ellipse is given in the figure 4.8. For the given ellipse, in order to finding the value of y upon y square upon b square is equal to 1 minus x square upon a square, and root both side it will be y upon b is equal to plus minus under root 1 minus x upon a का whole square, positive and negative. Here we have to find the area of whole ellipse, so both limit will be taken here, positive and negative also, and limit of x lies between minus a0 to a0, so limit of x will be minus a to plus a. So in integration, limit of x is equal to minus a to a, and limit of y is equal to minus b under root 1 minus x square upon a square, negative to positive. So in place of double integration r x plus y whole square dx dy, you can write upper limit to lower limit of x a to minus a, and upper limit of y b under root 1 minus x square upon a square to minus b under root 1 minus x square upon a square, and open the whole square of x plus y whole square is equal to x square plus 2xy plus y square dx dy. Now we have to calculate the integration of this function. So taking minus a to a, or area limit of y will be minus b to plus b is equal to 0 to b under root 1 minus x square upon a square, and doubling the area. If we have even function means fx is equal to f minus x. Agar both are equal, then limit of minus a to a fx dx is equal to 2 into 0 to a fx dx. In this case, function is even, so we have to applying this property of definite integral, and in the both cases limit of x and limit of y, it is because this function is even function, so we can apply the property, and this property is the 4 time of the integration of 0 to a 0 to b under root 1 minus x square a upon x square. लर्नर, यहाँ आपको ये समझना ज़रूरी है कि इस इलिप्स का हम पूरा एरिया फाइंड करने के स्थान पर अगर हम केवल एक क्वाड्रेंट में इसका एरिया फाइंड कर लें और उसको 4 टाइम्स कर दिया जाए, तो इस पूरे के पूरे इलिप्स का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा. तो जो हमने ये डेफिनिट
इंटीग्रल की प्रॉपर्टी अप्लाई की है। इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने से हम केवल एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करने वाले हैं और उसमें 4 का मल्टीप्लिकेशन जो इंटीग्रेशन से पहले हो रहा है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये 4 टाइम हो जाएगा तो पूरे के पूरे इलिप्स का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमने इसकी लिमिट को इवन फंक्शन होने की वजह से 0 to a एंड 0 to b √1 - x² में चेंज कर लिया है, क्योंकि ये एलिजिबल है इवन फंक्शन होने के कारण 4 टाइम्स। यदि यहाँ पे सर्कल होता है तो इसमें सर्कल में भी हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते थे। अब हम इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को। सबसे पहले इंटीग्रेशन होगा y के रिस्पेक्ट में। तो y के रिस्पेक्ट में x² को ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट एंड इंटीग्रेशन विल बी x² y एंड इंटीग्रेशन ऑफ y² = y³ and taking the bracket and putting the lower limit and upper limit in the last of the bracket. So putting the upper limit at the place of y minus lower limit at the place of y, we get the equation 4 0 to a x² b √1 - x² plus 1/3 b³ 1 - x² to the power 3/2. After calculating, the value will be in this form. So in order to change this equation into the simplified manner, we put x = a sin theta, then dx will be a cos theta d theta, and corresponding limit will be 0 to π/2. Whenever we putting lower limit 0 of x, limit of theta will be 0. Next we putting the upper limit b, lower limit of theta will be π/2. So putting the limit in this comparative regard 0 to π/2 and putting the value of x = a sin theta and dx = a cos theta d theta in this equation, or equation become 4ab 0 to π/2 a² sin² theta cos² theta after multiplying a cos theta into the bracket plus 1/3 b² cos to the power 4 theta d theta. 4ab a², this function is treated as gamma function. Gamma p theta gamma q power q theta d theta = gamma p plus 1/2 plus q plus 1/2 plus upon 2 gamma p plus q plus 2/2. So putting the value of p and q in the gamma, the equation will be gamma 3/2, again gamma 3/2 upon 2 gamma 3 plus same case cos to the power 4 theta sin to the power 0 theta, and putting this value in the gamma function. So again 1/3 b² gamma 5/2 gamma 1/2 2 gamma 3 gamma 5/2 आने का कारण ये है कि cos to the power 4, p यहाँ 4 है, p में आप 1 जोड़ेंगे p plus 1 5/2. इसी प्रकार से sin to the power 0 है, sin पे पावर 0 है तो q plus 1/2, तो 0 plus 1/2 तो गामा 1/2 अपॉन 2 गामा p plus q plus 2/2, तो p हमारा 4 है, q 0 है प्लस 2 टोटल 6 अपॉन 2 देन गामा 3. नाउ सॉल्विंग दिस 4ab a² gamma 3/2 = 1/2 gamma 1/2. Similarly again gamma 3/2 gamma 1/2 gamma 1/2 gamma 1/2 gamma 1/2 = √π, so putting the value. Similarly gamma 5/2 = 3/2 into 1/2 gamma 1/2. Gamma 1/2 is √π, again √π. So putting this value is finally we have find 4ab 1/16 pi a² plus 1/16 pi b², again taking common 1/16, so it will be pi ab upon 4 a² plus b². So this is the final
answer of this numerical problem. I hope you are satisfied with this session. If you have a query, any query, please mention in comment box. So in this problem, use of gamma is given here. गामा बीटा फंक्शन की प्रॉब्लम्स इसी चैप्टर के जस्ट बाद जो चैप्टर आएगा उसमें आएंगी, तब आप गामा फंक्शन को अप्लाई करना आसानी से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम ओवर हुई। थैंक यू, सी यू अगेन।